Hello students, I am back again with the new lecture on Indian economic development. This is lecture number 2 on Indian economic development. Previous lecture में हमने introduction part cover कर लिया था. In this particular topic, we will be covering the industrial sector, we will be covering the foreign sector and also the particularly occupational sector. Okay, पिछले sector में I have just only given you the intro part. Okay, now let us start with the lecture number 2. इन दिस हम दूसरे सेक्टर्स पे भी देखेंगे कि कैसा इम्पैक्ट था ब्रिटिश एम्पायर का ऑन द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मींस जब हमको इंडिपेंडेंस मिला. नाउ अब इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन इंडस्ट्री? Simply students that India could not develop a sound industrial base. उसका रीजन भी था क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री को एज अ फीडर इकोनॉमी कंसीडर करते थे. व्हाट एज अ फीडर इकोनॉमी? वी वर इंपोर्टिंग द फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम British and we were exporting the raw materials to Britain for converting them into finished goods. So British never wanted कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो हो, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिया का ग्रो होगा तो इसका इम्पैक्ट किस पे आएगा? डायरेक्टली उनके बिजनेस पे आ जाएगा, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे आ जाएगा, जो ब्रिटिशर्स को मंजूर नहीं था. इसीलिए British Empire never invested in the industrial sector, and that's why industrial sector at the eve of independence was in a very poor state. ये पहला रीजन था आपका particularly why the industrial sector was at pace. अब देखते हैं what were the state. First, there was very low contribution of industry to the GDP. सेकेंड, इनएडुकेट रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, मतलब उस टाइम गवर्नमेंट का कोई इतना रोल नहीं था, गवर्नमेंट की पर्टिकुलरली इंडस्ट्रीज नहीं चल रही थी, ऑल वाज ऑन डिपेंडिंग ऑन द प्राइवेट सेक्टर. वी वर हैविंग वेरी शॉर्ट कैपिटल गुड इंडस्ट्री. कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज क्या होती है स्टूडेंट्स? मशीन बेस्ड. अब मशीन बेस्ड इंडस्ट्री यहाँ पे होगी नहीं तो हम फिनिश गुड्स कैसे बनाएंगे? दैट इज द मेजर कॉस्ट. देन कमिंग इज एच, दैट इज ह्यूज कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स जो ब्रिटेन से आते थे. एंड लास्ट में twofold deindustrialization policy. Now here is a short form which I have given, that is acronym LIGHT, light. L is for low contribution, as you can see. L का मतलब यहाँ पे रहेगा low contribution of the industries in the GDP sector. Then is inadequate role of the public sector, मतलब government का कोई भी involvement नहीं रहा. Got shortage of capital industry, मतलब machine made products आपके पास नहीं थे, and we were facing huge competition from machine made goods which we were importing from Britain. और आप अगर वो उसे इम्पोर्ट करते हो बेटा, सो इन केस आप क्या कर रहे हो, आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है. जैसे अभी देख लो, एक एग्जांपल, अगर आप चाइना से कुछ माल इंपोर्ट करते हो तो आप डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को अफेक्ट कर रहे हो. You are not increasing the sales of domestic industry. You are not increasing the sale of domestic producers. आप किसकी increase कर रहे हो? Outsiders की. And twofold industrialization policy. Now, what was the twofold objective? मैं आपको बताऊंगा when we move on to that particular slide. चलो. Now, coming on to the first point, that is limited contribution in the GDP. आप क्या GDP contribution means near about? It is just a fact that only 17% of the contribution was being done from the industrial sector, and which is very low. क्यों? एक रीजन ये भी था that India at that time was a agricultural economy. Okay, we were having major occupation as agriculture. तो ये एक ड्रॉबैक भी था बिकॉज इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर डेवलप होते भी थे तो कैसे डेवलप होंगे? देयर आर नो इन्वेस्टमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड नो पर्सन्स टू वर्क इन द इंडस्ट्री, क्योंकि मेजर ऑक्यूपेशन ही किसका था? ऑक्यूपेशन वहां पे एग्रीकल्चर आ गया. सो हियर फर्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड कंट्रीब्यूशन टू इंडस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज टू दी जीडीपी, मतलब आपकी जीडीपी में बहुत लो कंट्रीब्यूशन था. नियर अबाउट ओनली 17% ऑफ कंट्रीब्यूशन वाज देयर इन दी जीडीपी. फिर आगे की बात करें, सेकेंड पॉइंट दैट आई टोल्ड यू, आई दैट इज इनएडुकेट रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. वेरी लिमिटेड ऑपरेशनल एरिया ऑफ पब्लिक सेक्टर, ओनली कन्फाइंड टू रेलवेज. अब देखो, ब्रिटिश एम्पायर ने उस समय क्यों ये डेवलप करे थे? रेलवेज, पावर जनरेशन एंड कम्युनिकेशन,
They wanted their own interest for their own economic interest. मतलब उनकी मेहनत के लिए, उनके फायदे के लिए उन्होंने क्या करा, रेलवे डेवलप करा, फिर उसके बाद पावर जनरेशन डेवलप करा और कम्युनिकेशन, ताकि वो क्या कर सके, यहाँ से गुड्स इजीली वहां से लेके जा सके फ्रॉम सी एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम. Airways was not that much popular forms of transportation. So railways were being used to transport the goods from the inner areas to the ports. ओके, इनर एरिया से आपके पोर्ट्स की तरफ आपको क्या करना था, आपको गुड्स पहुंचाने से. तो व्हेन यू आर टेकिंग द गुड्स फ्रॉम द इनर एरियाज, यू नीड अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, यू नीड अ स्ट्रॉन्ग रेलवे ट्रांसपोर्ट. और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले रेलवेज डेवलप करवाया था इंडिया में. ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही था. Why? Because इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट अभी भी इंडिया देख रहा है, दैट वी हैव अ स्ट्रॉन्ग रेलवे सिस्टम व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स. फिर पावर जनरेशन. Why? Because they needed suppose commercialization of agriculture, तो उसके लिए power generation was required, and even the communication, ताकि क्या सके, वो एक दूसरे से communicate कर सके and they maintain the law and order. Now next, that was G, got shortage of capital good industry. No capital good industry was there to promote the industrialization process. भैया आपके पास मशीन मेड इंडस्ट्री तो है ही नहीं जो मशीन्स बनाए. जैसे आज टेक द एग्जांपल, ट्रैक्टर्स मशीन्स आर देयर, ट्रैक्टर्स इंडस्ट्रीज आर देयर, बट एट दैट मोमेंट ये सब नहीं था. ब्रिटिशर्स क्यों ऐसा नहीं करते थे? बिकॉज ब्रिटिशर्स वांटेड इंडियंस टू बी डिपेंडेंट ऑन देम फॉर द सप्लाई ऑफ कैपिटल एंड हैवी इक्विपमेंट्स. क्योंकि अगर सिंपल है कि अगर आज वो हैवी इक्विपमेंट्स मेरे यहाँ पे बन जाएंगे, इधर ही इंडिया में बन जाएंगे, तो मेरे यहाँ से कौन इंपोर्ट करेगा? मींस इंडिया का पूरा इंपोर्ट क्या हो जाएगा? बंद. So we were having a very low investment in the capital good industries as well as machine-made industries. Means they were very low. Now coming on to the two-fold deindustrialization policy. देखो यहाँ पे उन्होंने दो धारी तलवार बोल सकते हैं इसे, कि भैया दोनों तरफ से उन्होंने क्या करा. सबसे पहले क्या करा उन्होंने, it they reduces the Indian export to raw materials for rapid industrialization. उनको अपने यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रो करना था, अपनी इंडस्ट्रीज ग्रो करनी थी. तो उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, इंडिया को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या दोगे, आप सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल्स हमको सप्लाई करते जाओगे, उसके अलावा कुछ नहीं. और यहाँ पे कमिंग टू दैट, यू विल बी इंपोर्टिंग अवर चीप फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. इससे क्या होगा, हमारे ब्रिटेन का एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगा और आपके यहाँ पे इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे. अब एक चीज याद रखना बेटा, व्हेन यू आर गोइंग फॉर इंपोर्ट्स, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाता है. व्हेन यू आर गोइंग फॉर बैलेंस ऑफ इंपोर्ट्स, चैप्टर अभी अपन ने पढ़ा है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, अगर आप ज्यादा इंपोर्ट्स करवाओगे तो इसका सीधा इम्पैक्ट आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट पे आता ही है स्टूडेंट्स. सो इन दिस पर्टिकुलर केस दैट वाज टू फोल्ड मोटिव ऑफ द पॉलिसी व्हिच वाज बीइंग डन. और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? पहला इम्पैक्ट हमारा हुआ दैट द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वर लीडिंग टू अ मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट. क्योंकि ग्रोथ ही नहीं है, सेल्स ही नहीं थी, तो भैया वहां पे जो पर्टिकुलर पर्सन है, जो एम्प्लॉयर है, वो सैलरीज कैसे देगा अपने एम्प्लॉयर्स को? तो उसने क्या कर दिया, उन एम्प्लॉयर्स ने अपने अंडर लेबर को हटा दिया. जैसे अभी कोरोना वायरस में आपने देखा, many of them have left their many of them were taken out of their job. सबको सैलरी कट ऑफ फेस करना पड़ा. So that was very much normal at that moment. Demand for cheap imported manufactured goods from Britain rise. क्योंकि भैया हमारे यहाँ पे तो मेंटालिटी है कि भैया हम चीप प्रोडक्ट्स ले लेंगे और अपना काम चलेगा. इंडियन मेंटालिटी इज लाइक मोस्टली दैट यूज एंड थ्रो, एंड दे ओनली वांट टू सी द लो कॉस्ट. भैया हमारे यहाँ का कोई अगर पर्टिकुलर पर्सन आज भी अगर खादी प्रोडक्ट बनाता है और वो महंगा है, और वहां से अगर कोई बैग लेके आ रहा है जो सस्ता है, सो इट्स अ इंडियन मेंटालिटी दैट वी विल बी ओनली फोकसिंग ऑन दैट विच इज चीप. हमको यूज एंड थ्रो से मतलब है, भले ही वो खादी वाला प्रोडक्ट हमारा सालों साल चल सकता है, बट वी विल नॉट गो फॉर दैट. तो यहाँ पे डिमांड उस चीप इम्पोर्टेड होना. अभी चलो दूसरी बात अभी नहीं करते, टेक द एग्जांपल ऑफ चाइना बेस्ड प्रोडक्ट्स. आज इंडिया में चाइना बेस्ड प्रोडक्ट अभी भी चल रहे हैं. व्हाई? बिकॉज द पर्टिकुलर इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना आर स्टिल बीइंग देयर. आपके इम्पोर्ट्स अभी भी नहीं रुक रहे, बिकॉज वी वांट ओनली लो कॉस्ट गुड्स. नेक्स्ट, ह्यूज कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स. क्या हो रहा था बेटा? मशीन मेड गुड्स कहाँ से आए थे? मशीन मेड गुड्स वर कमिंग फ्रॉम ब्रिटेन. एज आई टोल्ड यू, इट वाज ब्रिटेन व्हिच वाज सप्लाइंग द फिनिश गुड्स.
and they were at very low cost. Why were they were at low cost? Because वो machine से बनाए गए. Second, it gave a very hard competition to whom? To our domestic producers. आपके जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा कंपटीशन क्रिएट कर रहे थे, because domestic producers were not able to give at that price to the handicraft products in the India. I told you खादी products at that moment, very other products which were, तो उनका cost बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए उनके rupees means that particular were having at a very high value, and these machine mates were having a very low value. So it forced Indian craftsmen to shut down their enterprise, and this led to massive unemployment situation. Okay, so this was relating towards your industrial sector. आपका industrial sector बहुत उसमें फ्लोर पे था. The two-fold industrialized policy का बेटा आप chain effect देखते हैं यहाँ पे. What is the chain effect? Chain effect मतलब क्या होता है बेटा? एक के बाद जो sequence आते जाते हैं. पहले two-fold industrialization policy अचीव कर ली थी ब्रिटिशर्स ने. इसका impact क्या हुआ? Huge competition from machine-made goods. I was having what? Huge competition from machine-made goods. नेक्स्ट इट लीड टू व्हाट? शॉर्टेज ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री. कहाँ पे? यहाँ पे इन इंडिया, नॉट इन ब्रिटेन. वहां पे तो और बढ़ती जा रही थी. और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इनएडुकेट रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. आपका पब्लिक सेक्टर क्या कर रहा है? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई अपलिफ्टमेंट नहीं. देयर इज नो इम्प्लीमेंट इन द पब्लिक सेक्टर. तो इसका इम्पैक्ट इसको झेलना पड़ा जनरल पब्लिक को. एंड दैट्स व्हाई देयर वाज लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, एंड देयर वाज नो एडुकेट रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. Okay, so these are known as chain effect. अब एक board tip यहाँ पे आती है. What is the board tip? Okay, you are preparing for your board examination. Do prepare such flow charts. जब आप बेटा ये फ्लो चार्ट्स बनाओगे, the impression on the examiner will be very huge. Being a particularly checker of board copies from last 5 years, I have seen the presentations of various, but when you present your copies बेटा in such a way, आप अगर ये diagrammatic presentation दिखाओगे points में, कुछ भी हो जाए, every person have to write in points. No paragraphs are accepted in case of economics. चाहे भले आप आईडी अटेम्प्ट कर रहे हो, चाहे आप मैक्रो अटेम्प्ट कर रहे हो. दिस इज माय बोर्ड टिप फ्रॉम अ बोर्ड कॉपी चेकर, दैट वी ऑलवेज वांट पर्सन स्टूडेंट्स टू राइट इन पॉइंट्स. अगर 3 मार्कर क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स पे लिखो. अगर 4 मार्कर क्वेश्चन है, मेक 4 ब्रॉड पॉइंट्स. अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मेंशन दी फॉर्मूलाज. अगर फॉर्मूलाज आप मेंशन नहीं करोगे, उसके मार्क्स कट सकते हैं. Okay, so this is the particular case. Now moving on to the next, that is my goal of foreign trade. और now what is foreign trade? आपका कंट्री का ट्रेड बाहर की कंट्री से कैसे चल रहा है. So before British enter into India, what was the impact? Foreign trade, India was importing important trading nation since ancient time. हमको इसीलिए गोल्डन ईगल बोला जाता था. But after Britain, what was happening? Restrictive policies of commodity production, trade, and tariff, followed by colonial government, adversely affected the structure and volumes of India's foreign trade. मतलब बेटा हमारा फॉरेन ट्रेड भी किसने बर्बाद कर लिया? आपके ब्रिटिशर्स की कॉलोनियल गवर्नमेंट ने. दे रेस्ट्रिक्टेड द पॉलिसीज फॉर कमोडिटी प्रोडक्शन. मैंने से बोला आपको बेटा, दे फोर्स फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स. क्यों? क्योंकि उनको वो कैश क्रॉप्स अपने ब्रिटेन के रॉ मटेरियल के लिए चाहिए. और वो पूरा रॉ मटेरियल किस पर एक्सट्रैक्ट हो गया था? ओनली टू ब्रिटेन. इट वाज नॉट बीन सपोर्टेड टू एनी अदर कंट्री. So foreign trade restricted to only Britain. Only the British Empire was enjoying what? Only the British Empire was enjoying the benefit of such case. अब इसका impact, सबसे पहला अगर आपको impact समझना है बेटा, your impact short form I have given is DIM. That is first is D, that is drain of India's wealth. Okay. Then I, importer of finished goods and exporter of primary products, means we are considered as a feeder economy. And then third is monopoly, control of the British. मतलब आपका control, मतलब सिर्फ control किसका रहेगा? British Empire का on the foreign trade of the country. That was the major impact. Okay, अब एक एक करके इस पॉइंट को समझते हैं. That how drain of India's wealth was there. First, export surplus from foreign trade. मतलब जो भी foreign trade इंडिया कर रहा था, उसका जो भी surplus था, वो कहाँ जा रहा था?
It was resulted. See, export surplus from foreign trade did not resulted in any flow of gold and silver to India. मतलब जो भी benefit था वो किस में use हो रहा था? Export surplus was used to make the payments for expenses incurred by Britishers for their war expenses, for their administration department. मतलब जो भी वो इंडिया से कमा रहे थे वो अपनी तिजोरियां भर रहे थे. They were using it either for their own wealth, or they were using it for the war expenses, or they were using it for the administration. ओके तो यहाँ पे उनका वॉर एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए मतलब जो भी इंडिया से वो कम पर्टिकुलरली इनकम लेके जा रहे थे द फ्लो ऑफ इनकम दैट all income was being used for these particular purposes, either for war expenses or either for the admin department. अब इसका impact, importer of the finished goods. We were importer of the finished goods and exporter of the primary products. And so what? First, India became exporter of primary products. They say raw silk, cotton, sugar, indigo. So these all are raw materials which were being used by that importer of finished goods. मतलब वहां से जो finished goods आएगा, cotton, woolen clothes, capital good like machinery, वहां से हम finished goods लेकर आएंगे. कहाँ से? Britishers हमको finished goods supply करेंगे और इसका result क्या हुआ? Shortage of essential commodities in your domestic market. आपके इंडिया के मार्केट में क्या फेस होना हो गया बेटा? इंडिया के मार्केट में शॉर्टेज होना फेस हो गई. अरे पूरा रॉ मटेरियल वहां जा रहा है, सारे पर्टिकुलरली गुड्स वहां जा रहे हैं, तो इंडिया के मैन्युफैक्चर कहाँ से बनाएंगे? वेयर द इंडियन मैन्युफैक्चर विल गेट द रॉ मटेरियल्स इफ द होल रॉ मटेरियल इज बीन एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन? सो यहाँ पे मेजर इम्पैक्ट ये भी फेस करना पड़ा. नेक्स्ट इज मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश. जैसा told you, more than half of the India's foreign trade was restricted to Britain. Rest was allowed with countries such as China, Ceylon, Sri Lanka now, and Persia, Iran. बट एक चीज यहाँ पे याद रखना, स्विस कैनाल का ओपनिंग. नाउ ये क्या था बेटा? इसका एक कॉन्सेप्ट और ये वन मार्कर बन सकता है एज पर मी. वन मार्कर इज 1869 में स्विस कैनाल ओपन हुआ था. ये याद करना बेटा. स्विस कैनाल कब ओपन हुआ था? 1869 में. 1869 में आपका क्या ओपन हुआ? स्विस कैनाल. So students, the Suez Canal opening was a very great impact on the particularly British Empire's foreign trade, because Suez Canal ने क्या करा था बेटा? It gave a direct route to the Britishers. I will be showing in your next slide that how Suez Canal in fact was there. It gave a direct route canal towards the British. You can see Suez Canal is here as I located in the map. अब बेटा पहले क्या होता था, इनका ये रूट था विच वाज ऑफ 12,300 माइल्स, मींस 19,800 किलोमीटर्स. बट जैसे ही स्विस कैनाल ओपन हुआ, बिकॉज दे conquered this particular area also, so Suez Canal was under that area. So in that case, that used this particular area and it near about देखो आप 7,200 miles near about उनका जो एरिया कवर नहीं करता वो हाफ एरिया हो गया. सो most of the foreign trade was restricted to Britain with the opening route of Suez Canal. The canal provided a direct trade route for ships operation between Europe, America ports and port of located in South Asia. It opened in year 1869 and reduces the cost of transportation and made to access of the Indian market very easier. It was very easy to go on that particular market because उनका पूरा transportation cost यहाँ से आधा हो गया. That is the major impact. Suez Canal का ये बहुत बड़ा importance था. चलिए, in my upcoming lectures, I will be discussing about occupational sector. Thank you, students, for listening today's lecture. Do subscribe my channel for more lectures on Indian economics. Do share this particular video with your friends. It's totally free. And if you like the content, like the PowerPoint presentation, do hit the like button. I need your support for increasing the support for this channel. Thank you, students.